हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल स्कॉलर क्लासेस में। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ रिगार्डिंग सीबीएसई टर्म वन एग्जामिनेशंस जो नवंबर के मंथ में होने वाला है। तो वीडियो को इन तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, तो हम ऐसे 10 गाइडलाइंस के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। Dear students, CBSE has instructed its affiliated schools to continuously assess the students through various projects, assignments, and tests. CBSE will derive the final board result after both Term 1 and Term 2 examinations are over. The board had released a detailed notification informing about the details of rationalized syllabus for the 2021-22 batch on its website. So, देखते हैं कि ये गाइडलाइंस में क्या क्या लिखा है। तो नंबर 1 में लिखा है CBSE Term 1 examination will be conducted between November-December 2021 and the exam will be conducted in a flexible schedule of 4 to 8 weeks duration. Okay, point number 2 देखते हैं CBSE has not announced the official dates for the CBSE board Term 1 examinations, but they are expected to release it shortly. Point number 3, the CBSE will prepare and send the Term 1 question paper to the schools, and the paper will comprise multiple choice questions MCQ on the assertion reasoning type topics. तो इस बार MCQs रहने वाला है Term 1 में, सभी बच्चों को पता है, राइट? Point number 4, the CBSE Term 1 examination will be held within a duration of 90 minutes, that is 1.5 hours. The Term 1 exam will cover half of the CBSE 2021 syllabus. Point number 5, Term 1 examinations will be taken on the OMR seats. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है। तो इस बार जो Term 1 एग्जामिनेशन होगा वो OMR सीट पे कंडक्ट किया जाएगा, and the students' responses will be scanned and uploaded on the CBSE portal by the school officials. Point number 6, CBSE Term 1 exams marks will be added in the CBSE final board result for the 2021-22 academic year. Point number 7, to assess the students of class 10, schools will take 3 periodic tests along with activities like practical work, speaking, listening activities, projects, and others as said by the board. Point number 8, class 12 internal assessment will be done on the basis of end of topic or unit test, exploratory activities, practicals, or projects. Point number 9, schools will be required to upload all the marks scored by the students in the internal evaluation of the CBSE IT platform. And finally, point number 10, assessments, question banks, teachers training and other curriculums will be provided by the CBSE to the schools. तो डियर स्टूडेंट्स, ये गाइडलाइंस सभी स्कूल्स और सभी स्टूडेंट्स के लिए भी है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।